Yes, hello my dear friend. Good afternoon beta ji. So everyone tell me yaar fast audio and video both are clear to all of you. फटाक से बोलिए. And now we are going to discuss यार few question related to network theorems, okay, for the BARC session. तो आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? Everyone tell me fast. Okay. Yeah, tell me fast beta. Audio and video both are clear to all of you. तो बताइए बेटा, आवाज वगैरह सब कुछ सही है? यस, फ्रॉम माय साइड आई थिंक ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर. चलिए, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड. Yes, all clear. Thank you. Good afternoon, beta. So, in the today's session, we will discuss, okay, few questions related to network theorems, and we will try to understand almost every theorem with the help of single circuit. तो हम लोग बहुत सारा काम करने जा रहे हैं इन द टुडे सेशन. आपको जहां भी प्रॉब्लम हो, wherever you are having doubt, my dear friend, you can ask without any hesitation. I will try to resolve all your query. Okay. So now we are discussing BARC 23. Hardly we are having beta last almost 20 days. Okay. और लगभग ऐसी मान सकते हैं मोटा मोटी, क्योंकि होली भी बीच में है. एंड इसके साथ साथ आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू बेटा कि इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर paid courses, okay, for GATE 24 or GATE 25 for EC, electrical, mechanical or civil, whatever, for that my dear friend you can use my code Y503. Okay, so after using this code you will get maximum discount, as well as I will guide you in or we can say I will guide you beta with respect to everything. ठीक है. चलिए, एक पहला क्वेश्चन उठाते हैं फ्रॉम द नेटवर्क थ्योरम. दिस इज योर क्वेश्चन. तो सबसे पहले एक रफ पेपर उठाइए, कॉपी उठाइए, और जो जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसको जरा फॉलो करने की कोशिश करिए. जैसे in the first case, I just want to ask you example number 1, what will be the Thevenin voltage in this case? Okay, what will be the Thevenin voltage in this case? So can you tell me beta what will be the VTH? जरा देखिएगा डिस्कशन किस लेवल का होता है. Okay, so everyone tell me beta what will be the VTH in this case? This is a GATE PYQ. Okay, so what will be the VTH in this case? Everyone tell me fast, please. Okay, so I just want to do one thing beta. Here I just want to introduce another battery. Okay, and the battery voltage is, I just want to consider, my dear friend, here some battery is there, and this battery voltage, so we want to consider plus minus 30 volts. Okay, so now tell me what will be the Thevenin voltage in this case. Okay, what will be the Thevenin voltage in this case? एवरीवन शुरू करो. थोड़ा सा हेलो हाई करते रहा करिए एंड टेल मी वेदर ऑडियो इज क्लियर और नॉट और वीडियो इज क्लियर और नॉट. देखिए, मैं आपको एक यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूंगा. एक बार सभी लोग शेयर और लाइक करते रहे, है ना. नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू वेरी इजी थिंग बेटा, कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? सब थेवेनिन वोल्टेज. तो जरा देखिएगा कि थेवेनिन वोल्टेज सर कैसे पता कर सकते हैं. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बेटा जी अगर हम केसीएल लगाएं, ओके, व्हाट इज द थेवेनिन वोल्टेज इन दिस सर्किट सिचुएशन? Sir, if we are applying KVL, then reference point is not mandatory. But if we are applying KCL, then reference point is mandatory. Now see, by which procedure beta we can calculate our Thevenin voltage in, or we can say in easiest way. Okay, easiest way के लिए हम सबसे पहले एक reference ले लें यहाँ पे. Doesn't matter we are applying KVL or we are applying KCL. Okay, for anything यार we can consider at least one reference point somewhere here. ओके, तो जरा ऑब्जर्वेशन करना कि अगर मैं कह दूं कि बेटा यहां पे हमने कोई रेफरेंस लिया एंड एट दिस रेफरेंस पॉइंट वी हैव कंसीडर्ड दिस वोल्टेज जीरो इन द आइडियल केस, एज यू नो वेरी वेल यार. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, है ना, we have to measure our Thevenin voltage. So Thevenin voltage across this terminal basically we have to measure. So here beta we can write V of TH. Now with respect to ground, see at this node how much voltage we are having beta is nothing but VTH. Now see यार, इसमें करंट गिवन है बेटा, एंड दिस करंट इज आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ दिस I1 एंड सो ऑन. And now here beta we can calculate current by just Ohm's law. So can we apply KCL at this node to calculate Thevenin voltage? You are getting my point? So what will be the Thevenin voltage? इसको ऐसे लिख देते बेटा, KCL at node 1. ध्यान देना, KCL at node 1. So KCL at node 1 will be VTH, try to understand beta, VTH minus 30 divided by 5. VTH minus 30 divided by 5 is this current, because we have assumed that this Thevenin voltage is higher than this 30 volt. So VTH minus 30 divided by 5, and this current is entering, so simply beta minus 1. Okay, now try to understand, this is nothing but beta one current source of 0.5 I1 ampere. Okay, so अगर हम यहाँ पे देखें, see properly यार, अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा how much current must be flow through this or somewhere here,
आप कहेंगे सर जी इट इज नथिंग बट 0.5 I1, you are getting my point. 0.5 I1 current must be equal to 1 ampere because again independent quantity is given. So see, at this node A, I just want to say whatever current is entering must be equal to leaving current. So what we can write at node A, we can write, my dear friend, 0.5 I1 is equal to 1. So what will be the value of I1? So I1 equal to 1 by 0.5, so it's nothing but 2 ampere. Okay, hopefully this thing is clear. So I1 value is 2 ampere. So this 2 ampere we can put here because this current is nothing but I1. You are getting my point? This current is nothing but I1. So try to understand, yaar. Here beta VTH minus 30 minus VTH minus 30 divided by 5 is the one current. This current is entering, so we have considered negative sign here, and that current is beta leaving, so we have to consider positive 2 here is equal to 0. How many number of branches are connected with this node? One branch, second branch, and third branch. So we have to apply KCL at this node, and this node says that the algebraically addition of all current must be equal to 0. So this is the equation. Now after writing this equation, what we can write, beta? See properly. VTH minus 30 minus 1 and plus 2 is equal to plus 1. Plus 1 and into beta this 5. So here beta we can write plus 5 is equal to 0. So what will be the VTH? This side will come. So I think will be 25 volts. Okay. So this is the simplest solution of the circuit. एक बार बताइए बेटा, all the points are clear? फटाक से. तो अगर VTH निकालना होता तो हम ऐसे निकाल लेते हैं सर्किट का. अगर VTH निकालना होता तो बाय दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई. एक बार सभी लोग बोलो यार, क्लियर है? तो बेटा जी VTH कैलकुलेट करने के लिए हार्डली हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? सर सिंगल इक्वेशन चाहिए. बट जरा कंपैरिजन करना सीखो. वी नो दैट बेटा इन ए पर्टिकुलर कंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज. ओके, सो सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट these conductors are connected in series. So this current 0.5 I1 must be equal to 1 ampere. Now due to this reason we have written here beta this 0.5 I1 equal to 1, so I1 equal to 2 ampere. Now this current is already given in this particular resistance, it's nothing but I1. So here we can put beta 2 ampere. So simply KCL equation and VTH will come 25 volt. एक बार बताओ, क्लियर है टू एवरीवन? फटाक से सभी लोग. तो VTH कितना आ रहा है बेटा? VTH कितना आ रहा है बेटा? VTH कमिंग सर दिस 25 वोल्ट. डन करें इसको. VTH is coming 25 volt. Okay. Now अगला सेकंड क्वेश्चन में सेम सर्किट में आपसे पूछना चाह रहा हूं. So what will be the beta Norton current? Can you tell me? Everyone fast. So second question in the same circuit beta Norton current. ध्यान देना, Norton current will be. चेक करते रहना है ना क्या होगा. Norton current will be. Please tell me everyone to determine this Norton current. What we have to do in the circuit? To determine this Norton current, what we have to do in the circuit? सभी लोग यार बोलते रहा करो, थोड़ा शेयर लाइक करते रहा करो. What we have to do बेटा? To determine Norton current in the circuit. To determine Norton current in the circuit. आप कहेंगे सर to determine Norton circuit, the element through which we have to determine Norton current, those particular element will replace by short circuit. So that in this condition beta we can measure maximum current through the particular load. Maximum current through the particular load. Try to understand. So we are going to do post-mortem of this analysis, Thevenin, Norton, and many more things. Okay, so step by step देखते हैं. So here beta we have shorted this one. First thing, because through this we have to determine Norton current. So these terminals A and B will be short circuited. Now beta here we can write some current I of N. You are agree? Here we can write some current of IN. Yeah, very nice beta. Short circuit terminals A and B. Now another beauty यार. See बेटा अगर इसको हम शॉर्ट कर दें, then what will happen in the circuit? See, अगर सर हम यहाँ पे एक ग्राउंड ले लें, okay, so with respect to ground, how much voltage will reach here बेटा? Is nothing but 0 volt. Agree करते हो? Is nothing but यार 0 volt. हमें डिटरमाइन करना है नॉर्टन करंट. I know यार, out of you everyone can determine Norton current or correct answer. I'm damn sure you will determine correct answer. But the question raising here yaar, how much time do we require to handle this circuit, or how many number of equation we require? So the we can say beta here the most important point is nothing but to determine current IN with minimum we can say number of like KVL KCL equation, or in other words beta we can say
we have to determine Norton current in minimum time. Okay, when we can reduce time of the analysis of the circuit only when we are writing minimum number of KCL, KVL equations. Because if we will write more and more number of KVL and KCL equation, then to solve those equations we require more time. Obviously you are getting. So try to understand the circuit first and handle your circuit if it is possible just by Ohm's law, because Ohm's law will not create any, you know very well, equation in terms of 2 variable or 3 variable. It will have just single variable. So single equation, single variable, we can easily calculate. So try to handle our circuit just by Ohm's law first. इतनी बात क्लियर है? तो एक बार मुझे यहां पे बताइए बेटा कि अगर आपको एक नोड का वोल्टेज पता है, फॉर एग्जांपल हियर वी हैव कंसीडर्ड 0, as we know that yaar, by the consideration of reference point anywhere in the circuit, current through any element will never be affected. Only the node voltages can affect. But we are really not serious about the node voltage. We are serious about the current through the element, and we know that beta current through this element will not affected by the selection of reference point. Either you are selecting your reference point somewhere here, or you are selecting reference point somewhere here, or somewhere here. Doesn't matter. So reference point selection will never affect your Norton current. So you are free to select your reference point first. But let us assume someone is really very serious to ask your node voltage. Then in that situation, we must be serious about the selection of reference point. Okay, and definitely if any examination they are asking the node voltage, then that professor must provide reference point in the circuit. तो ये point आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अभी तक सारे points clear हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं. So now beta ji, we have considered somewhere here reference point 0, so 0 here. Now see how much current beta flowing here. आपने कहा sir 1 ampere, 1 ampere. See here how much voltage at this node. आपने कहा sir 0 volt. How much voltage at this node with respect to ground? आपने कहा 30 volt sir. So now see beta Ohm's law, 30 minus 0 divided by 5. So how much current this particular resistance will allow is nothing but high to low. 30 minus 0 divided by 5 is this beta 6 ampere. So this 6 ampere, 1 ampere will enter somewhere here, and resultant come is nothing but 7 ampere. You are getting my point? Now another beauty of this question is nothing but beta 0.5 I1 is equal to 1. So I1 definitely is 2 ampere. Here we can write 0.5 I1 is equal to 1. So I1 equal to 2 ampere. Again you are agree with this. So this current I1 must be equal to 2 ampere. Again you are agree. Now see beta this current is coming 2 ampere. Now this 2 ampere is coming in this fashion, 5 ampere in this way. So sorry 7 ampere. So 7 ampere entering, 2 ampere leaving here. So this Norton current must be in this fashion, and that current must be equal to 5 ampere. Agree na? This current must be equal to beta 5 ampere. Everyone tell me fast. This current must be equal to 5 ampere. Check करो and tell me fast. Share और like करते रहो यार. Now एक क्वेश्चन रेज हो गया यहाँ पे, एक क्वेश्चन रेज हो गया यहाँ पे कि सर व्हाट विल बी द थेवेनिन रेजिस्टेंस, अगर कोई हमसे पूछता, और व्हाट विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस. सो कैन वी ड्रॉ बेटा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस in the terms of Norton or in the terms of Thevenin. So here my dear friend, we have determined here our Thevenin voltage, which is coming my dear friend 25 volt, and this is nothing but my dear friend Norton current. If my calculation is correct, then this Norton current is coming in opposite direction. So the Norton current actually we have to measure in the downward direction, but it is coming in upward direction. So Norton current my dear friend we can write IN is equal to minus of 5 ampere. Agree करते हो? Minus of 5 ampere. सभी लोग बोला करो यार. IN equal to minus of 5 ampere. So now we know that sir, what will be the Thevenin resistance or Thevenin impedance or Norton resistance or Norton impedance is nothing but open circuit voltage divided by short circuit current. So what will be the third question? Third question I just want to ask here to all of you is nothing but, dear friend, Thevenin resistance. Okay, no need to consider Thevenin impedance term here because you know very well this circuit having only resistance will not have any inductor or capacitor. So Thevenin resistance. So what will be the Thevenin resistance in this case? So we can write beta RTH is nothing but VTH divided by IN. So what is the VTH here? VTH I think coming 25 divided by this is minus 5. So answer is minus 5 ohm. So tell me whether this is correct or not.
सभी लोग बोला करो यार, मत करो शेयर लाइक, आप जितने लोग प्रेजेंट हो बस उतने लोग खुश होके बोलो। ऑल दी पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So here, yeah, VTH divided by IN is 25 divided by -5. So how much this resistance is coming? -5 ohm. Okay, but as we know that, yeah, in the lumped system, okay, in the electrical core, we can say the arrangement of the system in the electrical domain, or we can say whenever we want to use a lumped element in a particular circuit, it is impossible to achieve negative resistance. Okay, you know, concentrated impedance or resistance or inductance will never be negative value, but here unfortunately it is coming negative. So what we have to do? We have to understand this question again in the proper way. So why this negative sign is coming? Okay, why this negative sign is coming? Okay, so as we know that from the starting onwards, at the moment when we have considered this particular circuit, my dear friend, of the GATE examination, in that particular circuit 30-volt battery was not present, but here you have considered this 30-volt battery. So definitely this 30-volt battery will affect the responses of the system. So say here, due to this 30-volt battery, definitely circuit will have some new changes. Let us consider this 30-volt battery is not present in the circuit. Then what will happen? So in that particular case, VTH will be positive quantity. I don't know how much this quantity will come. But in this case, when we want to measure Norton current, see here, this battery is not present. So at the moment when you will short terminal A and B, definitely there will be no current in this resistance. So these both current beta will enter through this. And in that situation, we can determine our current. So what is the value of I1? You know, 1 ampere. And somewhere here, I1 will come, I think, yes, 2 ampere. Okay, so not like this. See, again interesting story, my dear friend. See, at this time of measuring this current, somewhere here you are having also battery. So with respect to this battery, we have to also consider phi. Now see here, if this battery is not present, my dear friend, then current how much will flow here? 1 ampere, and that current will be 2 ampere in that direction, I1 value. Okay, but see here, we are having this battery also. See properly, this battery also. So with respect to battery, here we can say 10 volt and here 0 volt. So 10 minus 0 divided by 5 is nothing but minus 2 ampere. So tell me which current we have to consider to calculate this Norton resistance, sorry, Norton current or Norton resistance or Thevenin resistance. Again, there will be really too much controversy at the time of analysis. Even not controversy, we have to understand the concept behind the current direction and so on. So see here 0.5 I1 equal to 1, so I1 equal to 2 ampere, and here current is already showing 2 ampere in this direction. So in this direction 2 ampere will flow. But according to the circuit condition, how much current will flow? Again answer is 2 ampere. But what will be the actual direction of current? That current we have to measure. तो एक बार try करिए and tell me final answer. क्या होना चाहिए? IN बेटा? अरे यार आप लोग बिल्कुल नहीं सही से रिप्लाई करते हो, थोड़ा सुना करो बे यार, समझा करो चीजों को। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि सर here VTH coming 25, here Norton current is coming -5 ampere, but due to this all those reason this resistance is coming negative. Now another question going to be raised, whether this current will be -5 ampere or any other value, because in this circuit situation if you will measure this current, let us assume beta this I1 current is not given in the circuit, then what you will say? Sir, with respect to ground here, how much voltage is there? 10 volt. So 10 minus 0 divided by 5 is nothing but 2 ampere, but in the opposite direction. So which current you have to consider, yaar? Either this yellow color current, beta, either this green color current or this yellow color current. Can you tell me fast? कौन सी current आप consider करेंगे in this situation? Yeah, tell me fast, यार. सर इन नेगेटिव कैसे हुआ? यही तो क्वेश्चन है। अगर हम बेटा ऐसे कर ले कि 7 एम्पियर हियर इंटर और ये कितनी है 2 एम्पियर, जो कि ऑलरेडी यहां से आ गया था। सो 7 यहां है, 2 एम्पियर लीव, तो 5 एम्पियर इंटर होना चाहिए, तो हमने 5 एम्पियर बोला और आईएन को -5 लिखा। भाई आईएन के कंपैरिजन में नेगेटिव साइन है तो -5 लिखा। अब जरा चेक करके मुझे बताओ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जस्ट थिंक ओवर इट। तो क्या करंट आनी चाहिए? आईएन विल बी -5 एम्पियर और एनी अदर वैल्यू, क्योंकि यहां पे थोड़े से पॉइंट्स हैं। अगर हम इस सर्किट के हिसाब से देखें तो I1 2 एम्पियर आ रहा है, बट ओम्स लॉ से देखें तो I एम्पियर 2 एम्पियर ही आ रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी हम लोगों को I1 की? जल्दी से देखो, सीखो, है ना, डिस्कशन करो, एकदम मत करो शेयर लाइक, कुछ मत करो यार, आप बढ़िया से सीखो बस। देखो क्या होगा, देखो ध्यान दीजिएगा बेटा। सर यहां पे एक पॉइंट पे आते हैं, सी प्रॉपरली समवेयर हियर सर वी हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट। ओके, सी यार आराम से चेक करिएगा बेटा।
how much current beta will flow, sir, somewhere here? Just give me few seconds. See, how much current beta will flow here? Sir, 1 ampere. Now this is 0 volt, this is 30 volt. So 30 minus 0 divided by 5 is nothing but 6 ampere. So sir, 6 ampere will flow in this direction, 1 ampere will flow in this direction. So somewhere here, my dear friend, how much current will flow at this location is nothing but 7 ampere. Agree ho? Now sir, 0.5 I1 equal to 1 ampere. So I1 will be 2 ampere. So this I1 beta, this I1 will be 2 ampere. Now just by Ohm's law, ground here, so 10 volt here, see here. Now we know that in the resistance beta, current will flow high to low potential. So 10 minus 0 divided by 5 is this 2 ampere. Now tell me which direction of current we have to select. Either this beta pink color direction of current और येलो कलर डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन सी करंट सिलेक्ट करनी पड़ेगी? यानी कि आईएन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आईएन की वैल्यू होनी चाहिए -5 एम्पियर और बेटा 7 और 2 9 एम्पियर. बोलिए फास्ट से, आईएन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9 एम्पियर और -5 एम्पियर. सभी लोग बोले आईएन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -5 एम्पियर और 9 एम्पियर. सभी लोग यार. I1 छोड़ दो ना, I1 कहां दिया है उसको देख लो या छोड़ दो और अपने हिसाब से देखो, आप सर्किट के हिसाब से देखो. IN की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू सर्किट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू सर्किट कंडीशन. यस माय डियर फ्रेंड, येलो कलर होना चाहिए. और येलो कलर देखो, I1 तो उस बंदे ने लिखा है, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट सर्किट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या होगी? दिस वन. सो I1 विल नॉट, सॉरी, IN विल नॉट बी इक्वल टू माय डियर फ्रेंड -5 एम्पियर. इट विल बी माय डियर फ्रेंड 9 एम्पियर. नाउ सी, अगर हम जल्दीबाजी करते तो नेगेटिव रेजिस्टेंस आ रहा था, जबकि नहीं आना चाहिए कायदे से. एज आई टोल्ड यू, लम्प्ड सिस्टम इज देयर. सो वी आर हैविंग कंसंट्रेटेड रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. पक्का क्लियर है? टिल नाउ ऑल द पॉइंट्स आर. नाउ अब यहां पे सुंदरता देखते हैं. IN इज कमिंग 9 एम्पियर. सो नाउ सर, दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस शुड नॉट बी अपीयर इन द सर्किट. तो जैसे ही नेगेटिव रेजिस्टेंस आए, दो बातें होंगी. अगर KVL KCL सही से सेटिस्फाई करके ही नेगेटिव आ रहा है, तो फिर अब आपको कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा. अदरवाइज वी कैन चेक अगेन व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज सर गोइंग टू बी अपीयर. This negative sign should not be appear in our circuit. हाँ, एक कंडीशन में हो सकता है VTH नेगेटिव हो, IN नेगेटिव हो, चलेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल एट द टाइम ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस और इंपीडेंस. बट इन दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, देन रेजिस्टेंस मस्ट बी नेगेटिव. इन दैट सिचुएशन you must be serious about the कि अप्लाइंग KCL एंड KVL और मैथमेटिकल जॉब, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्वांटिटी पॉजिटिव आए और दूसरी नेगेटिव आए. अगर रेयर केस में ऐसा हो रहा है, तो फिर आप इन दोनों मेथड से रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं. कौन से मेथड से? सर, VTH और IN के रेशियो से. इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज सम अदर मेथड टू आइडेंटिफाई और कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस. अभी बताइए, क्लियर है इतनी बात? सभी लोग बोलिए प्लीज. टिल नाउ ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? ओके, वेरी नाइस. तो IN की वैल्यू रख दी जाए बेटा. सो IN इज नथिंग बट 9. सो हाउ मच दिस रेजिस्टेंस विल कम? हाउ मच दिस रेजिस्टेंस विल कम? सो फटाक से बोलो. सो दिस रेजिस्टेंस सर विल कम 25 डिवाइडेड बाय 9 इज 2.78 ओम. चेक करो शशांक, ऑल दी पॉइंट्स आर क्लियर और करेक्ट आल्सो? कोई मैथमेटिकल एरर कहीं भी? कोई मैथमेटिकल एरर कहीं भी? एक ही बच्चा हमेशा बिना नैतिक जिम्मेदारी ले लेता है कुछ रिप्लाई करने का. इतने लोग प्रेजेंट रहते हो, 7 8 10 लोग, बोल दिया करो यार कि सर सही है आंसर, कैलकुलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, आप परेशान मत होइए, है ना. चलिए ठीक है. ओके, 2.7 ओम. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब यहां तक आ गए. अब मैंने कहा यार सर ना, मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि वाकई में दिस पर्टिकुलर नॉर्टन करंट विल कम 9 एम्पियर या नो नहीं आएगी. आपने कहा सर किस बात का डाउट? सिंपल तो क्वेश्चन है, इसमें कहां 9 एम्पियर नहीं आएगी. मैंने कहा ठीक है, बट मैं बहुत डफर हूं और ओके, मुझे नहीं आइडिया कि 9 एम्पियर आएगी भी कि नहीं. तो हम लोगों ने बेटा इस सर्किट को फिर से लिया. एंड नाउ जस्ट आई वांट टू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट थर्ड क्वेश्चन. ना थर्ड क्वेश्चन. नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क बेटा, calculate this current, okay, calculate this current IN. I want to make this particular path as a short circuit, and I just want to write this current is Norton current or this current is ISC something. ये मैंने नाम दे दिया आपको in this particular circuit. So now calculate ISC. क्वेश्चन देखिएगा बेटा. Third, calculate ISC by superposition theorem. बाय सुपरपोजिशन थ्योरम. तो आपको बहुत सारी चीजें मैं सिखाता रहूंगा एक ही एग्जांपल में. बाय सुपरपोजिशन थ्योरम.
ऐसे डिस्कशन देखते हो कभी शशांक? आप प्रेजेंट हो तो आप ही बता सकते हो। जनरली क्या होता है कि एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसका आंसर दे दिया, अगला क्वेश्चन आ गया। अब देखिए कितना पोस्टमार्टम सा होता जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्वेश्चन वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ कांसेप्ट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि बेटा अभी ये स्टॉप हो गया, चलेगा अभी 10-20 मिनट और डिस्कस करेंगे ऑन द सेम सर्किट। चलो अब बताओ क्या होगा। द वैल्यू ऑफ ISC विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, आपने कहा सर काउंट द नंबर ऑफ डिपेंडेंट, सॉरी काउंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट। मैंने कहा एक तो बालक यहां है और एक यहां है। आपने कहा ठीक है सर, अब अगर हमें सुपरपोजिशन ही लगाना है, क्योंकि आपने मुझे पता है क्यों लिया होगा, बिकॉज वी वांट टू लर्न सुपरपोजिशन कंसेप्ट एज वेल। तो सर यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट एलिमेंट है तो दो केसेस हो गए। बाकी क्या है सर, डिपेंडेंट एलिमेंट है उसकी परवाह करनी नहीं है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ केसेस विल बी देयर? आपने कहा सर 2 केसेस। तो मैंने इसको मान लिया बेटा दिस इज सोर्स 1, दिस इज सोर्स 2। पक्का क्लियर है? अरे यार आप एनर्जी को बिल्कुल हमारी डिग्रेड कर देते हो। सभी लोग बोला करो यार। So now beta, see properly how many number of sources we are having? S1 and S2. At the time of applying superposition theorem, we have to just count independent sources. With respect to independent sources, we have to see the effect of current or voltage across each element or through each element. Or definitely beta, the moment at which you will calculate current or voltage of each element, only single source will be activated in the circuit situation when we apply superposition theorem. This single source activation means only independent. Dependent sources will be unaltered. So in other words, when we will apply superposition theorem to a particular circuit, we are not supposed to beta interrupt our dependent sources. We can only deactivate or activate independent sources. So at a time, single independent source will be in activation mode, and rest independent element will be in deactivation mode. Okay, so how many number of independent sources we are having? Only 2. So sir, we are having two different cases. तो केस 1 हमने ऐसे ले लिया बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, सॉरी केस 1 हमने ऐसे ले लिया बेटा बाय सुपरपोजिशन थ्योरम. व्हाट वी कैन राइट बाय superposition theorem. So case 1 is nothing but, let us consider beta, S1 is activated, that means it is beta in activation mode, and S2 is deactivated. So what is the meaning or significance of deactivation? Deactivation means if we are having independent voltage source, then it will be short circuit. We are having independent current source, then it will be open circuit. And if we are having initial charge of inductor or capacitor, then those also will replace by either short or open, depends upon the consideration of electrical equivalent circuit of inductor and capacitor. So if we are considering electrical equivalent circuit of the capacitor as a voltage source, then that will be short circuit, or in inductor if you want to consider as a voltage source, again short circuit. Otherwise you can consider, you know very well, current terms also, or dependent current source also in the capacitor and inductor. In that situation, those sources will be open circuit. So please mind it, the initial charge of inductor and capacitor will not be considered as a dependent element. Those energies will consider as an independent quantities. Okay, I think you are now getting my point. Just I want to tell you like this. Let us consider beta, we are having some supply in this fashion, and one switch and one resistance and this capacitor. I just want to say this capacitor is initially charged by 10 volt and the supply is nothing but 100 volt. So we have to calculate this current I by superposition theorem after closing this switch. So in that situation beta, we don't have single independent element. Okay, ध्यान समझिए, according to superposition. Superposition ये कहता है कि अपने पास एक ये सोर्स है जो सबको दिख रहा है, लेकिन ये भी एक सोर्स है, तो आप इसको कैसे डील करोगे सुपरपोजिशन से? दो केस बना के, एक में इसका इनिशियल चार्ज 0 मानोगे, करंट निकालोगे, एक में इसको डीएक्टिवेट करोगे, इसके इनिशियल चार्ज से करंट निकालोगे, एंड नाउ दिस रिजल्टेंट विल बी आवर फाइनल करंट. आप बताइए, क्लियर है ऑल पॉइंट्स? चलिए इस पॉइंट पे अगर हम आगे बढ़े तो नाउ व्हाट वी कैन से, sir, S1 is in activation mode and S2 is in deactivation mode. Okay, hopefully this thing is clear. तो अगर इसकी हम बात कर लें, let me copy this one. तो पहले सोर्स को हम एक्टिवेट करते हैं, दूसरे सोर्स को हम डीएक्टिवेट करते हैं. तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आ जाते हैं. नाउ दिस सोर्स इज डीएक्टिवेटेड, सो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से. सो दिस बैटरी इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय बेटा शॉर्ट सर्किट, like this. Okay, so this battery is going to be replaced by short circuit. Hopefully you are getting my point. Now tell me what will be this ISC. आपने कहा सर इसको ISC ना बोल के ISC1 बोल देते हैं. Okay, now with respect to ground beta, how much voltage will appear here? 0. So now sir, 0 here, 0 here, so no current will pass here. So how much current beta will pass here? 0 ampere. Try to understand. ध्यान दीजिएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम वी आर अप्लाइंग. सर 3 होने चाहिए,
करंट सोर्स को मिला के, सॉरी बेटा 3 होने चाहिए, वेरी नाइस, बिकॉज दिस इज द करंट सोर्स ना, इसको हम भूल ही गए, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बिल्कुल बेटा 3 होने चाहिए। तो S1 S2 S1 S2 एंड बालक S3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3 होने चाहिए। सो दिस बेटा वी वांट टू कंसीडर S3। अब होल्ड करना, नाउ बेटा वी वांट टू मेजर दिस करंट ISC, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ केसेस बेटा, वी आर हैविंग बेटा 3 केसेस। तो केस 1 में हमने माना S1 is activated and S2 and S3 are deactivated. Agree na? S3 and S2 are deactivated. Now see my dear friend, if S3 deactivated, so this current source will replace by beta ji open circuit. Agree na? This current source will replace by my dear friend open circuit. Check करो सही है? ओके हाँ, ऐसी बातों पे ध्यान रखा करो। देखिए आप इतना बोलना होता है तो कहीं कहीं कोई पेंट नहीं देखा फिगर में, तो वो फिगर आपको बताना चाहिए, ठीक है। बट थैंक यू शशांक। ओके सो ऑब्वियसली बेटा हियर वी आर हैविंग 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेस, सो वी आर हैविंग 3 डिफरेंट केसेस। डन करें। नाउ बेटा दिस इज ओपन, दैट वन इज शॉर्ट। नाउ सी इफ वी विल अप्लाई शॉर्ट सर्किट हियर, यार आपने कहा सर यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और वैसे भी दिस रेजिस्टेंस इज कमिंग अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस, सो नो करंट विल फ्लो हियर बिकॉज़ दिस इज शॉर्ट सर्किट पाथ। नाउ बेटा इसको तो ओपन ही कर दिया तो सर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब ISC1 की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा सर बड़ा आसान है, देखो यहाँ पे 30 यहाँ पे 5, तो यही तो 1 kVL हुआ, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 is nothing but sir 6 ampere in this direction. 6 ampere in this direction, only in this closed circuit current will flow. So what will be the ISC value in this case beta is nothing but 6 ampere in downward direction. अभी बताओ क्लियर है? 6 ampere in downward direction बेटा जी। हटाएं, आगे बढ़ते हैं। Case 2. So case 2 we want to handle in this way beta. Now source H2 is activated and S3 and S1 are beta deactivated. Deactivated means again आते हैं कौन किसको क्या माना है, यहाँ पे आ जाओ बेटा। Now S1, now this S1 is beta deactivated, so इसको हटा देते हैं, it will be short circuit, and this S3 will also be deactivated, so this is also open circuit. So here beta open circuit, this is short circuit, and now this one is activation. Okay, now how much current will flow here? This current beta we can say ISC2 something. Now see here, this is the resistance across this short wire, so no current will flow in this resistance, so this resistance current will be 0. That one is open circuit, obviously no current will flow. Now how much current will flow in this fashion beta? Sir, why in this fashion? Because this is high, this is low potential, so 10 divided by 5 is nothing but balak 2 ampere. Agree na? Calculation check karte rehna. So ISC is nothing but beta, ISC2 is nothing but balak 2 ampere in downward direction. Tell me fast. Okay, clear है? अरे यार साथ नहीं दे रहे हो आप सभी लोग, बहुत ही गजब की डिस्कशन कर रहे हैं। We are learning lot of concept related to network theorems in the single session. Please tell me fast. All the points are clear beta till now? Done? आगे बढ़ जाएं। So sir, this current is coming 2 ampere. Now we have to measure last case. Okay. So now last case says that, case number 3 says that S3 will be activated, S1 and S2 beta will be deactivated. Agree na? Now how much current will flow in this case through this short wire? See here beta ji. As we know that these batteries will replace by again short circuited. Okay, this is also like deactivation, so short circuit. So now these batteries will replace by short circuit like this beta, short circuit like this. Okay, now see properly, this resistance or that resistance are coming across this short wire, so no current will flow in this situation. So how much current will flow here beta? Sir, 0 ampere. This current will also be 0 ampere. Now see, this current beta will be 1 ampere. Now see, in this situation dependent source does not really playing any role. So here how much current is flowing beta? 1 ampere. Here 0, so again here 1 ampere. Here 0, so here 1 ampere current only will flow in this fashion. So here again beta 1 ampere. This current is nothing but 0 ampere. This current is 0 ampere. So again we are getting here 1 ampere current. So now see how much this ISC3 current. आप कहेंगे सर in this situation ISC3 is also coming 1 ampere in that downward direction. So now according to superposition we can say ISC will be ISC1 plus ISC2 plus ISC3. Now according to the direction, so now see beta, according to direction, first current is flowing downward, second current is flowing downward, third current also flowing in downward. So what we can write, 6 ampere downward, 2 ampere downward, and 1 ampere in the downward. Sorry, 1 ampere in the downward. See, all current are flowing in downward, so simply addition is final answer 9 ampere current. So by superposition it is also coming 9 amperes. Now tell me, all the points are clear beta? बोलिए यार सभी लोग। सर 3 होने चाहिए, बिल्कुल सही बेटा, हो गया।
अच्छा ये कमेंट अभी पुराना वाला हो गया, ठीक है। क्लियर एवरीवन, टेल मी फास्ट। सो हाउ मच दिस करंट इज कमिंग यार, नॉर्टन करंट, शॉर्ट सर्किट करंट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्टन करंट, इट इज नथिंग बट 9 एम्पियर। नाउ एक बच्चा उठा, उसने कहा सर अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता इन द सेम सर्किट व्हाट विल बी द थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो क्या हमें थेवेनिन वोल्टेज और नॉर्टन करंट दोनों आइडेंटिफाई करना था, या डू वी हैव एनी अदर शॉर्ट मेथड टू हैंडल दिस सर्किट? ओके, आपने कहा यस सर शायद तो है, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड बेटा जी टेस्टिंग मेथड। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिंग मेथड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने कहा ठीक है सर, एक काम करते हैं, दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके, इसको अगला पार्ट बना लेते हैं, एंड आई जस्ट वांट टू रिमूव बेटा दिस वन, ओके, क्योंकि ये तो था ही नहीं। तो इतना सर्किट अपने पास। अब क्वेश्चन आया एग्जाम में, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको बोल देते हैं फोर्थ और फिफ्थ वॉट एवर। नाउ बेटा डिटरमाइन थेवेनिन रेजिस्टेंस, डिटरमाइन थेवेनिन रेजिस्टेंस। आपको पुराना कोई डेटा फॉलो नहीं करना है, भूल जाइए अबाउट द थेवेनिन वोल्टेज, नॉर्टन करंट, सब कुछ। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन जस्ट थेवेनिन रेजिस्टेंस, just Thevenin resistance across terminal A and B, across terminals my dear friend A and B। और एग्जाम में आप बैठ गए, अब मुझे बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे RTH in the minimum time, okay, in the minimum time, please tell me fast, in the minimum time how we can determine this beta RTH? आपने कहा सर टू डिटरमाइन RTH we can apply testing method also, but the important thing is that sir, बहुत ध्यान से सुनिए सर, the important thing is that when we will apply testing method to measure the resistance or impedance of any network or circuit, all the independent active elements must be replaced by their own impedance. This is similar to two-port technology. This is similar to two-port technology, my dear friend. The moment at which you will apply testing signal across any terminals, at the same moment your independent active element must be deactivated or replaced by their own impedance. In other words, your voltage source will replace by own impedance, that means in the ideal case tends to 0, and your current source in the ideal case, you know, parallel resistance is infinite, so current source is going to be replaced by infinite. In other words, the independent sources will not be responsible for the excitement in the network or circuit when you want to measure electrical equivalent resistance or impedance by the testing method. So जब हम टेस्टिंग मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं सर, एट दैट मोमेंट इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट की वजह से पूरे सर्किट और नेटवर्क में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो योर मेजरमेंट विल बी द रॉन्ग। Now in this situation we have to just apply one testing current or voltage across the measuring terminals, and this testing voltage or current signal will tell us about the resistance or impedance across the same terminals। जहां पे आपने टेस्टिंग सिग्नल लगाया हुआ है वहां से मेजर करके आपको डेटा देगा। Now how much this RTH should come, or how much this RTH value will be? The answer is very simple. Again sir, previous one, और प्रीवियसली कितना आ रहा था 25/9, सो नॉट किया 27 2 पॉइंट समथिंग है ना, सो 2 पॉइंट समथिंग अगेन आना चाहिए। बट इस केस में हमारा जो टाइम होना चाहिए टू हैंडल दिस क्वेश्चन विल नॉट बी मोर देन 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट और 1.5 मिनट। ओके, तो एक बार फिर से शुरू करिए एंड टेल मी फाइनल आंसर इन दिस सिचुएशन। फटाक से टेस्टिंग मेथड से बताओ, टेस्टिंग मेथड से। सो अगला पॉइंट चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा बात पे। सी सर सर्किट हैविंग, बहुत ध्यान सुनिए, सर भी लिख दिया मैंने, ओके, तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड। सर्किट हैविंग स्टार्ट करके लिख देते हैं बेटा, सर्किट हैविंग ओके, सर्किट हैविंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट टाइप्स एलिमेंट, okay, types element, so to measure Thevenin or Norton resistance, we have two methods, okay, we have only two methods, okay, two methods। फर्स्ट वन क्या होता है बेटा? फर्स्ट वन होता है RTH और ZTH, और you know Zn और Norton resistance Rn is nothing but VOC divided by ISC, or we can say
VTH divided by Norton current. Okay, but as you know that कि एक बार हमें VTH पता करना पड़ेगा, दूसरी बार IN. So this is the time taking process. So second method we can say testing method. क्या होता है बेटा? Testing method. So now you are I think familiar with this testing method. So we want to apply this testing method to handle this circuit. Everyone tell me fast. Clear है अभी तक? क्लियर है अभी तक? टेस्टिंग मेथड. तो वो सर्किट को उठाते हैं और बेटा मैं लगाना चाह रहा हूं इस पे करंट टेस्टिंग मेथड फर्स्ट, उसके बाद वोल्टेज से भी देखेंगे. ओके, सो टेस्टिंग मेथड. नाउ बेटा as we know that when we will apply testing method all independent sources must be replaced by their own impedance. तो पहले केस में बेटा हमने करंट टेस्टिंग मेथड लगाया. ये ध्यान रखना, जो भी टेस्टिंग सिग्नल लगाएंगे वो सिस्टम में पावर क्या करना चाहिए? देना चाहिए. इसको हमने मान लिया बेटा 1 एम्पियर. सो दिस 1 एम्पियर करंट सिग्नल इज आवर टेस्टिंग सिग्नल. क्या है बेटा? टेस्टिंग सिग्नल. When we will apply this testing signal, our all independent sources must be deactivated. So see here beta, this voltage source must be short circuited, this voltage source must be short circuited and this current source must be open circuited. Agree करते हो? बोलते रहो यार. Current source must be open circuited. Now जरा ध्यान से समझिए बेटा, here we are having short circuit and now this is the resistance. Try to understand here how much currents are there. 1 ampere is the testing current and this is the another resistance. Here beta we are having open terminal. Now how we can measure resistance sir? See here beta, जो testing signal लगाया है इसके across कोई V होगा. Now RTH is nothing but, इसको यहां मैं लिखता हूं, RTH is nothing but बेटा V test डिवाइडेड बाई आई टेस्ट. अब आप कहेंगे सर वी टेस्ट तो नहीं लगाया आपने, आई टेस्ट लगाया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी टेस्ट की जगह बेटा वी अक्रॉस आई टेस्ट. ओके, दैट मींस जो आपने करंट सोर्स लगाया उसके अक्रॉस वी क्या आ रहा है. सो वोल्टेज अक्रॉस आई टेस्ट डिवाइडेड बाई आई टेस्ट आपने कितना रखा है? आपने कहा सर आई टेस्ट वी हैव अज्यूम्ड दैट 1 एम्पियर. व्हाई? जस्ट फॉर इजी मैथमेटिकल एनालिसिस. सो वी कैन से बेटा RTH in this case, sorry, in this case beta we can say RTH will be how much? Is nothing but VI of test. बस खत्म, इतना I of test. डन करें बेटा इतनी बात. Everyone tell me fast, all the points are clear. सभी लोग बोलते रहे all the points are clear. Now आगे बढ़ जाते हैं. So VI test. Now how much this beta voltage will come? Observation करना, how much this voltage will come? V. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, अगर हम यहां से I1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? नाउ दिस इज ओपन सर्किट तो कोई मतलब नहीं है इसको. मैं I1 ये वाली I1 नहीं है, कुछ और मान लेते हैं, IA मान लेते हैं. ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IA बाय करंट डिवीजन रूल. सी बेटा दिस इज द 1 एम्पियर ना, 1 एम्पियर. देखो ये 1 एम्पियर दो रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा, ये 5 है वो भी 5 है, तो यहां लिख दें 1 into 5 डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ बोथ इज नथिंग बट 10 बेटा, तो ये हो गया 0.5 एम्पियर. ओके, agree ना? how much total current? 1 ampere, half half divide हो गया 0.5 ampere. now so this one beta RTH is nothing but, sorry, this V test is nothing but 0.5 ampere. so 0.5 ampere beta will come in this fashion. ठीक है ना? now V will be beta 5 into 2.5 is nothing but 2.5. एक बार चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है क्योंकि आंसर सेम नहीं आ रहा है. पिछली बार कितना आ रहा था बेटा? 2.25 by 9. यहां पे आएगा 25 2.5. ऐसा क्यों हो रहा है? या 2.78 आना चाहिए. ओके, चेक करो बेटा कोई मिस्टेक सर्किट में. 5 चेक करना, 5 सही है. ओके, एक बार चेक करो बालक. 1 एम्पियर वी हैव अप्लाइड अक्रॉस दिस बेटा टेस्टिंग, और जहां पे हमने अप्लाई किया है 1 एम्पियर उसके रिस्पेक्ट में एक वोल्टेज शॉर्ट, दूसरा वोल्टेज शॉर्ट. सही है, शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया, वो करंट सोर्स था तो वो ओपन हो गया. ठीक है ना? और ये भी ठीक है, 1 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर चला जाएगा, और 0.5 into 5 जस्ट 2.5, और आना चाहिए 2.78. चेक करो यार क्या हो रहा है कैलकुलेशन में, कहां पे क्या. या बेटा सर्किट इज नॉट गोइंग टू बी गिव अस करेक्ट रिस्पॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू आवर एक्साइटेशंस. तो ये भी देख लो, हर एक पॉइंट पे देख लो कैसे क्या होगा. सभी लोग यार देखो बालक, VTH कितना आ रहा था? VTH आ रहा था सर 25 वोल्ट. आई नॉर्टन क्या आ रहा था सर? दिस 9 एम्पियर. सो 25 by 9 इज द फाइनल आंसर, तो 2.78. पर सर जब हम यहां से देख रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन करना क्या प्रॉब्लम आ रही है.
Sir, when we will apply testing method or 1 ampere current source here beta, so obviously at the time of applying testing method, this 1 ampere current source will be open circuit है, और यहाँ पे आ जाओ बेटा, so this voltage source will be short circuit, this voltage source will be short circuited. Okay, now here we have applied 1 ampere ना, so this 1 ampere will equally divide, और कोई पाथ नहीं है ना, तो यहाँ चली गई बेटा 0.5 ampere और यहाँ चली गई 0.5, so 5 into 0.5 is 2.5, so V test is coming 2.5, so answer must be equal to 2.5. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग आंसर आ रहा है, इस पे देखिए काम करके, ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग आंसर आ रहा है। आप में से अगर अच्छे बच्चे जुड़ जाएं, यकीन मानिए बेटा कि कंसेप्ट ना आप किस लेवल पे सीखोगे, आप उसका आकलन भी शायद ऐसे नहीं कर सकते, वो आपकी जो इमेजिनरी दुनिया है, काल्पनिक दुनिया है, उससे भी ऊपर चला जाएगा। सर, डिनोमिनेटर सोर्स का इग्नोर किया जा सकता है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ओके, आप अपने हिसाब से देखिए फाइनल क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से तो 2.5 आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2.5 आ जाए, या तो वो गलत है या ये गलत है, या हमारा जो भी कैलकुलेशन स्टेप वगैरह रॉन्ग है, जो भी है एक बार आप आराम से फील कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप आराम से फील कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देख लीजिए प्रॉपरली हर चीज को। और कोई वे नहीं है बेटा, यहीं से देख लीजिए, सही से समझ लीजिए। अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखने जा रहा हूं फिर से, है ना, तो चलिए एक क्वेश्चन यहां से उठाते हैं, प्लीज बहुत सीरियस रहिएगा। नाउ बेटा आई जस्ट वांट टू आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑब्जर्वेशन करना, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूं बेटा कि वी जस्ट वांट टू कंसीडर गेट क्वेश्चन। ओके, और गेट के क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां मैंने रखा आपके लिए ये, और जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स यार, है ना, ये भी हटा दें, ये भी हटा दें। लो करिए सभी लोग। सो नाउ बेटा यू हैव टू कैलकुलेट आरटीएच। ओके, क्या कैलकुलेट करना है? आरटीएच। कॉपी पेस्ट, आपको आरटीएच करना है। दो केसेस हैं आपके पास, कैलकुलेट आरटीएच, फाइंड आउट आरटीएच बाई बेटा आरटीएच इक्वल टू वीओसी डिवाइडेड बाई आईएससी, इस मेथड से पता करो, और यहां से पता करो बेटा आरटीएच बाई टेस्टिंग मेथड, बाई टेस्टिंग मेथड, बाई बेटा टेस्टिंग मेथड करिए। सो टेक अराउंड बेटा 1.5 मिनट्स हियर। ओके, और 1 मिनट यहां पे लो और चेक करो दोनों में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर बेटा नहीं आया तो फिर दिक्कत है, अगर नहीं आया सेम तो फिर दिक्कत है। अब करो शुरू यार। RTH by two methods beta, first one by you know very well this VTH, okay, divided by IOC or Norton current, and second one by testing method. Please start your job, करते रहे बालक। अब दिखाओ हुनर, दो क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों में आरटीएच निकालना है, वन बाई वीटीएच डिवाइडेड बाई नॉर्टन एंड सेकंड वन बाई टेस्टिंग मेथड। प्लीज स्टार्ट योर जॉब।
जी बालक आया सर। यार रिप्लाई क्या करो सभी लोग, कितना आ रहा है बोलिए बोलिए सभी लोग। जी बालक, कोई आंसर आपकी साइड से? रिप्लाई एवरीवन में भी बेटा एक ही बच्चा बेचारा रिप्लाई करता है। चलिए खैर शुरू करते हैं, है ना, कहानी को। सो 1.5 मिनट्स और 1 मिनट लगभग ओवर हो गए होंगे आपके। नाउ बेटा वी वांट टू डिटरमाइन, आप एनर्जी डाउन कर दिए मेरी, है ना, जिस लेवल से हम डिस्कस कर रहे थे शशांक, है ना, 2.5 ओम। वेरी नाइस बेटा। तो दोनों मेथड से 2.5 आ रहा है, चेक करो। तो पहले केस में हमें क्या पता करना है सर? वीटीएच। वीटीएच फटाक से पता कर देते हैं सर। वीटीएच क्या होगा? ग्राउंड ले ले बेटा फटाक से। सो यू नो वेरी वेल हियर हाउ मच करंट बेटा इज देयर? 1 एम्पियर। ओके, और दिस करंट ग्राउंड ले ले तो दिस वोल्टेज बेटा विल बी 10 वोल्ट। ओके, दिस नोड वोल्टेज। लेकिन ये वाला वोल्टेज थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये यहां से I1 निकाल लें तो ये I1 मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं I1। सो 0.5 I1 0.5 I1 इज इक्वल टू बेटा 1। सो I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर बालक हमने यहां लिख दिया। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर इन दिस सिचुएशन। नाउ बेटा अगर यहां 1 एम्पियर है और यहां 2 एम्पियर है, तो इस वायर में कितनी करंट जानी चाहिए? 1 एम्पियर, लाइक दिस। ओके, नाउ बेटा अगर यहां से देखें तो इस जगह पे अपना प्लस माइनस 5 वोल्ट आना चाहिए। क्लियर है? चेक करो सबसे पहले। सो प्लस माइनस 5 वोल्ट, सो वीटीएच विल बी माइनस 5 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन ये होता है, क्या सर ये मेथड सही है जो हमने अप्लाई किया है? एक बार चेक करो सभी लोग, क्या ये मेथड सही है बेटा जो हमने अप्लाई किया है? आराम से चेक करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो एक केसीएल से जब हम कर रहे हैं तो हमने क्या माना बेटा? ग्राउंड यहां। ओके, और केसीएल भी नहीं लगाया, सिंपल। दिस इज द करंट 1 एम्पियर, दिस इज करंट बेटा 0.5 I1। इसको I1 को हम अपर डायरेक्शन में ले रहे हैं। ओके, सो 0.5 I1 इज इक्वल टू बेटा 1 एम्पियर। सो 0.5 I1 इक्वल टू 1। सो I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर हमने यहां पुट कर दिया। नाउ ये 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, तो यहां मिला के 2 एम्पियर हो गया। सेटिस्फाई। नाउ बेटा अगर हम यहां पे बात करें फिर से, तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया प्लस। सो 1 एम्पियर इन अपर डायरेक्शन। सो ड्यू टू दिस रीजन बेटा वोल्टेज विल अपीयर हियर 5 वोल्ट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VTH? इज कमिंग माइनस 5 वोल्ट। एग्री ना? नाउ अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये सही है कि नहीं? पहले पॉइंट चेक करो। दूसरे केस में अगर हम लोग आए, so just copy this one, and now beta we want to determine Norton current. Okay, so what will be the Norton current? Just give me few seconds. What will be the Norton current बेटा? Norton current के लिए सर इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। now अगर इसको शॉर्ट सर्किट करें, यहाँ ग्राउंड लें, तो what will be this current बेटा? is here somewhere, here is 0 ampere. so how much current will flow here? 10 minus 0 divided by 5 is nothing but 2 ampere. so this 2 and this 1 is equal to बेटा 3 ampere.
Now you are getting my point, because no current will flow here. Short circuit path is there, so 0 ampere. Now the question raising again some problem, and that problem is coming, बहुत ध्यान से समझना बेटा. This problem is coming nothing but this voltage VTH is coming -5 volt. See here, polarity is opposite. So VTH how much coming beta? -5 volt. Agree na? And ISC or Norton current is coming beta. How much? ISC is coming 3 ampere. ISC is coming 3 ampere na? 5 by done beta, 5 by 10 by 5 2 ampere, और this is 1 ampere. So it is coming beta 3 ampere. चेक करो, करेक्ट है. तो अब कहां पे दिक्कत हो रही है, VTH में कि इसमें? तो VTH सही है कि नहीं है, उस पे फोकस करो. VTH सही है कि नहीं है, इस पे फोकस करो. अब यार नेगेटिव साइन आ गया, यही हमें समझना है. नेगेटिव साइन आ गया, यही हमें समझना है क्यों हो रहा है. क्वेश्चन तो बेटा आप जानते हो 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन जितने आपके डाउट वाले पहलू रेज हो सकते हैं उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं. ठीक है, तो चेक करो क्या आना चाहिए. व्हाट विल बी द VTH यार? भाई उधर 2 एम्पियर है, इधर 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर है और ये बेटा इधर से 1 एम्पियर है, तो ये कितना हो गया? 1 + 1 = 2. सेटिस्फाई हो रहा है. तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, चेक करो एंड टेल मी फास्ट यार. कहां पे दिक्कत आ रही है शशांक, यही हमें समझना है. VTH इज कमिंग नेगेटिव, ISC इज कमिंग सर पॉजिटिव, तो रेजिस्टेंस आएगा नेगेटिव, और रेजिस्टेंस नेगेटिव आ गया तो प्रॉब्लम आएगी. इसका मतलब हम VTH by ISC से रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. हम VTH by RTH से रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. हाँ, 2.5 ओम कैसे आया? 2.5 ओम के लिए बेटा आपका पता है क्या होना चाहिए था. चलिए मैं यहां पे ले आता. 2.5 आप कह रहे हो, तो VTH की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा? आई थिंक आनी चाहिए 7.5 ना. सही है ना? 7.5 डिवाइडेड बाई, हाँ ऐसे कुछ आना चाहिए. तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि यार सर ये वाली करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दी है, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दी है तो बेटा ये करंट कितनी हो जाएगी? 0.5 I1 is equal to again 1 ampere. So I1 equal to बेटा 2 ampere. Now see, डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 2 एम्पियर. सो नाउ बेटा दिस I1 की वैल्यू क्या हो गई सर? 2 एम्पियर. ओके, 2 एम्पियर. लेकिन क्या ये डाउनवर्ड करने से इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर यहां पे देखा जाए बेटा तो ये करंट जो है 1 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन फ्लो हो रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो कायदे से साइन क्या आना चाहिए था? नेगेटिव. सो -2, और -2 करोगे तो इसका मतलब सर डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इज गोइंग टू बी चेंज. नाउ बेटा यहां से चेक करो कितनी करंट जाएगी? 3 एम्पियर यहां से और 2 एम्पियर यहां से, 1 एम्पियर यहां से, और इसमें आ गई बेटा 3 एम्पियर. ठीक है, लेकिन तब उस केस में क्या होगा? 5 और 3 15. सो ये हो गया बेटा 15 वोल्ट. ये कितना हो गया? 15 वोल्ट इन दिस फैशन. और ये करंट कितनी आ रही? 3 एम्पियर. तब भी दिक्कत है. तो ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी कंट्रोवर्सी आ रही है? हाँ, यही तो सीखना है बेटा. ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है? सभी लोग यार थोड़ा इत्मीनान से जवाब दीजिए. What are the values of VTH and IN in this circuit situation? पूरे सर्किट आपकी स्क्रीन पे है. अगर करंट इस डायरेक्शन में लेते हो तो वो VTH क्या होगा? अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हो तो VTH क्या होगा? और ISC. मैं जितना कंफ्यूज आपको कर सकता था मेरी साइड से डन है. अब आपका अपना चांस है बेटा, आप अपने हिसाब से खेलिए. सभी लोग प्लीज आप अपने हिसाब से खेलिए.